Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will be discussing about reading test 2 from IELTS 14 passage 3. So इस पैसेज में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रॉम 27 to 34 as choose the correct heading for each section from the list of headings below. ठीक है, आपको list of headings find out करने हैं. Then if we check क्वेश्चन नंबर 35 to 40, देन यहाँ पे 35 to 37 में आपको चूज़ वन वर्ड ओनली लिखना है एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, यानी कि आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं रिलेवेंट वर्ड फाइंड आउट करके एंड देन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. सो गाइस, कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कन्फ्यूजन होती है जब भी थर्ड पैसेज आता है, तो दे फील लाइक इट्स वेरी लेंथी एंड वी कैन नॉट सॉल्व दैट इन इन द डिसाइडेड टाइम फ्रेम लाइक 20 minutes और इवन 50 minutes. ठीक है, सो इसको सॉल्व करने का राइट वे क्या है? तो सबसे पहले आपको, जैसे कि यहाँ पे A to H दिया गया है और आपको करेक्ट हेडिंग्स फाइंड करने हैं. ठीक है, A से H में करेक्ट हेडिंग्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले योर ड्यूटी विल बी टू रीड A to H वन बाय वन, राइट. आपको A भी पढ़ना पड़ेगा, B C फॉलोइंग सब भी पैसेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे टू सॉल्व क्वेश्चंस 27 to 34, राइट. सो आपने पहले ये सारा पढ़ लिया है. जब भी आप पैसेज 3 सॉल्व करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं. क्वेश्चंस पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट से लेकर के 9th में जो भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है वो हम कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देंगे. कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्टेन अप्रोच एंड कंप्लेंट्स. ठीक है, फंडामेंटल बिलीफ्स है जो इनकरेक्ट है. अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस. Companies that have suffered from changing their approach. Companies suffered from changing their approach. What people are increasingly expected to do. People expected to do. यानी कि आपके दिमाग में ये सारा चीज़ होना चाहिए. जब भी आप ए पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. याद नहीं रखना है, बट इट शुड बी इन योर माइंड दैट ऐसा कुछ तो यहाँ पे दिया गया था. ठीक है, हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करेंटली इम्पॉसिबल. ठीक है, अचीव आउटकम्स करेंटली इम्पॉसिबल. नाइदर अप्रोच guarantees continuous improvement. Neither approach continuous improvement. Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages. More disadvantages than advantages. ठीक है, सो ये आपने पढ़ लिए सारे के सारे ऑप्शंस. सो 27 to 34 क्वेश्चंस, राइट. देन हम ब्लैंक्स पढ़ेंगे. दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं पैसेज 3 में. ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं. इसमें चूज वन वर्ड ओनली. न्यूमरस ट्रेनिंग सेशंस आर एम्ड एट पीपल हु फील दे आर नॉट ब्लैंक इनफ. हु फील they are not blank enough. Being organized appeals to people who regard themselves as. People regard themselves as. ठीक है, being organized. Many people feel blank with aspects of their work. Many people feel with work. ओके, ये सारे हो गए हमारे ब्लैंक्स. देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. बोथ बिजनेसेस and people aim at order without really considering its value. These both aim at order without value, considering value.
Innovation is most successful if the people involved have distinct roles. Innovation successful distinct roles. ठीक है. Google was inspired to adopt flexibility by the success of General Electric. Google was inspired. So this is how you are supposed to read all the questions first, so that जब भी आप ये सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर इसका भी हिंट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैसेज में से मुझे इसमें से आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न टू अंडरलाइन ऑल द क्वेश्चंस. अभी हम पैसेज फर्स्ट यानी कि ए पढ़ेंगे. Organization is big business, whether it is of our lives, all those in boxes and calendars, or how companies are structured. A multi-billion-dollar industry helps to meet the need. We have more strategies for time management, project management, and self-organization than any other time in human history. We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day, and even our sleep, all as a means to becoming more productive. Every week, countless seminars and workshops take place around the world to tell a paying public that they ought to structure their lives in order to achieve. The rhetoric has also crept into thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. The number of business schools and graduates has massively increased over the past 50 years, essentially teaching people how to organize well. ठीक है. सो हम अभी ऑप्शंस देखेंगे. सो ऑप्शंस में है पहला है कंप्लेंट्स अ सर्टेन अप्रोच. हमको ऐसे सर्टेन अप्रोच जैसा तो कुछ दिखा नहीं है. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रेटेजीज दी गई थी, कुछ मैनेजमेंट करने को बोला गया था, ऐसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया था. सो यहाँ पे कुछ कंप्लेंट जैसा नहीं था. सो ए नहीं, ए हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है. सेकेंड वन इज फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इनकरेक्ट. नो. अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस. कोई नया अप्रोच यहाँ पे नहीं दिया गया है. कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू. ठीक है. व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू. आंसर कहाँ पे है? वी आर टोल्ड दैट वी ऑट टू ऑर्गेनाइज आवर कंपनी. ठीक है. यहाँ से आपका आंसर है. सो ए में आएगा number 6. Okay. Then ironically, however, the number of businesses that fail has also steadily increased. यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी दिखाई है. ठीक है. बिजनेस फेल दैट हैज़ increased. Work related stress has increased. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied. Workers claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed. This begs the question, what has gone wrong? Why is it that on paper the drive for organization seems a sure shot for increasing productivity, but in reality falls well short of what expected? ठीक है. सो यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ बिजनेस फेल दैट हैज़ स्टडीली बिन इंक्रीज्ड. ओके. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. ओके. सो हम ऑप्शंस देखेंगे. कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ए सर्टेन अप्रोच. ठीक है. सो हमारा आंसर आएगा नंबर 1 इन बी. हाउ? आंसर क्या है? फंडामेंटल बिलीफ्स, कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ए सर्टेन अप्रोच. कुछ कंप्लेंट्स दी गई है यहाँ पे सर्टेन अप्रोच के लिए.
ठीक है। द वे देयर वर्क इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, एंड द वे दे आर मैनेज्ड. So this is how we will get number 1 as the answer of section B. Now see, this has been a problem for a while now. Frederick Taylor was one of the forefathers of scientific management. Writing in the first half of the 20th century, he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern companies. So the approach has been around for a while. ठीक है. So यहाँ पे आएगा number 3, early recommendations concerning business activities. How? तो यहाँ पे दिया है, this has been a problem for a while now, was one of the forefathers of scientific management, writing in the first half of the 20th century, यानी कि early recommendations. He designed a number of principles to improve the efficiency. Early recommendations concerning business activities. So आंसर आएगा हमारा 3rd नंबर. ठीक है. Now D. New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. The problem is not necessarily the management theories or strategies we use to organize our work. It's the basic assumptions we hold in approaching how we work. Okay? Here it's the assumption that order is a necessary condition for productivity. This assumption has also fostered the idea that disorder must be detrimental to organizational productivity. The result is that businesses and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort. ठीक है. So D में if we see, so complaints about the, ये first तो हमारा आ गया. ठीक है. Second number, fundamental beliefs that are incorrect. ठीक है. So यहाँ पे आंसर आएगा number 2. New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. The problem is not necessarily the management theory strategies we use to organize our work. It's the basic assumptions we hold in approaching how we work. ठीक है. Now E. So what's more, recent studies show that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of organization and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. Some argue that in a business, if the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resources involved can be better used elsewhere. Now we will be reading the options. Okay. So complaints, no. Fundamental beliefs, no. Early recommendations concerning business activities, no. Organizations that put a new approach into practice. यहाँ पे कोई न्यू अप्रोच प्रैक्टिस में लाने की कुछ बात नहीं है. कंपनीज दैट हैव सफर फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, अलग अलग कंपनीज ने दी है यहाँ पे. ठीक है. व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू,
How to achieve outcomes that are currently impossible. Neither approach guarantees continuous improvement. Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages. ठीक है. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of organization and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. ठीक है. So 9th will be the answer for section E. Now we will read F. In fact, research shows that when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage in as one organic group. These environments can lead to new solutions that, under conventionally structured environments filled with bottlenecks in terms of information flow, power structures, rules, and routines, would never be reached. Okay. So, our answer will be how to achieve outcomes that are currently impossible. ठीक है. Now, in fact, research shows that when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure, enable everyone involved to engage as one organic group. These environments can lead to new solutions that, under conventionally structured environments, would never be reached. In recent times, companies have slowly started to embrace the disorganization. Many of them embrace it in terms of perception and in terms of process. For example, Oticon, a large Danish manufacturer of hearing aids, used what it called a spaghetti structure in order to reduce the organization's rigid hierarchies. This involved scrapping formal job titles and giving staff huge amounts of ownership over their own time and projects. This approach proved to be highly successful initially, with clear improvements in worker productivity in all facets of the business. In similar fashion, the former chairman of General Electric embraced disorganization, putting forward the idea of boundaryless organization. Again, it involves breaking down the barriers between different parts of a company and encouraging virtual collaboration and flexible working. Google and a number of other tech companies have embraced these kinds of flexible structures, facilitated by technology and strong company values, which glue people together. Okay, so यहाँ पे organizations that put a new approach into practice. So in recent times, companies have slowly started to embrace this disorganization. Many of them embraces it in terms of perception and in terms of process. ठीक है. A word of warning to others thinking of jumping on this bandwagon. The evidence so far suggests or disorder, much like order, also seems to have diminishing utility and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful, but we should not fear nor venerate one over the other. The research also shows that we should continually question whether or not our existing assumptions work. So यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा neither approach guarantees continuous improvement. ठीक है.
अगर हम पैसेज फिर से पढ़े तो a word of warning to others thinking of jumping on its bandwagon. The evidence so far suggests disorder, much like order. Also seems to have diminishing utility. Can also have detrimental effects on performance if overused. ठीक है, so neither approach guarantees continuous improvement. ठीक है, जैसे मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जब भी आप ए से एच तक रीड करो तो उस वहाँ पे जब भी आप रीड कर रहे हो तो आपको ये हिंट मिल जानी चाहिए कि इनके आंसर्स कौन से पैसेज में थे. ठीक है, न्यूमरस ट्रेनिंग सेशंस, तो ट्रेनिंग सेशन वाला जो भी पैसेज था वो ए था. ठीक है, ए में उसके आंसर्स थे. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, न्यूमरस ट्रेनिंग सेशंस आर एम्ड एट पीपल हु फील दे आर नॉट ब्लैंक इनफ. सो ये सेशंस किनके लिए है, फॉर दोज पीपल हु फील दैट दे आर नॉट ब्लैंक. सो यहाँ पे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स यानी कि ट्रेनिंग सेशंस. ठीक है, सो हम ये पूरा पढ़ेंगे. We ought to organize our company, our home life, our week, our day, and even our sleep, all as a means to becoming more productive. So it is for the people who feel that they are not productive enough. ठीक है, being organized appeals to people who regard themselves as ये भी यहाँ पे कहीं था. एवरीथिंग टू गेट एवरीथिंग राइट, यानी कि बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. सो देमसेल्व्स एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड परफेक्शनिस्ट्स. सो यहाँ पे आंसर आएगा perfectionists. ठीक है, मैनी पीपल फील ब्लैंक विद एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क. उनके वर्क से उनको क्या फील होता है, तो यहाँ पे तो बिजनेस का दिया है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured. So they feel dissatisfied. ठीक है, now we will see true, false and not given. Both businesses and people aim at order without really considering its value. The result is that businesses and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort, considering its value. एंड रिजल्ट को कंसिडर नहीं करते, यानी कि ट्रू आएगा. इनोवेशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इफ द पीपल इन्वॉल्व हैव डिस्टिंक्ट रोल्स. इनोवेशन का हमने एफ में देखा था, एफ पैसेज में शायद. Okay, in fact, research shows that when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. और यहाँ पे क्या दिया है, distinct roles. So contradiction है, so false आएगा. Google was inspired to adopt flexibility by the success of General Electric. So यहाँ पे ऐसा कुछ mention नहीं किया था, that is why it will be not given. Okay, I hope you have understood the video completely. If you have any doubts or questions, you can always ask in comment sections. Thank you for watching.